हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स। सो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम पहले हमने एक वीडियो डाला था सोल्यूशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ BHU 2016। सो उस पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि हम और भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को डिस्कस करें। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 2018। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120 and total number of marks will be 360. That's mean each question carry 3 marks. और 120 questions के लिए जो हमारे पास टाइम होगा that will be 2 hours. And 1 marks will be deducted for each incorrect answers. अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो अगर हमें 2 hours में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो इसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम में जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे दैट विल बी वेरी सिंपल। देयर आर नो मच कैलकुलेशंस इन दीज क्वेश्चंस। सम ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली ऑन द फॉर्मूला बेसिस एंड ऑन कंसेप्चुअल बेसिस। सो 2 hours में आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं उतने करने हैं। बट आपको एक बात जहन में रखनी है कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको अटेम्प्ट नहीं करना, बिकॉज 1 marks विल बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो अगर मैं बात करूं कि इस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है तो सिंपली आपने पूरे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आते हैं सबसे पहले वो करने हैं, और जिसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन जिसको आप सिंपल पढ़ के उसका आंसर बता सकते हो। सो पूरे 120 क्वेश्चन में से सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देन उसके बाद वो क्वेश्चन जिसमें थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशंस हैं। कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं बस वही करिए। इससे ये होगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। बिकॉज अगर आप पहले ही कैलकुलेशंस में फंस जाएंगे तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकते हैं वो आपके मिस हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 hours का टाइम है। सो सिंपली आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको डायरेक्टली आते हैं, जो डायरेक्टली फार्मूला बेसिस और कंसेप्चुअल बेसिस हैं। देन वो क्वेश्चन करिए जिसमें सिंपल कैलकुलेशंस हैं बट आपको जो आते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसकी आंसर की वेबसाइट पे डाल दूंगा www.onlinephysics.org। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आंसर की डालेंगे वो डालेंगे 1 to 50 क्वेश्चन। आई नो कि नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा मई में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप हमारी साइट में जाके जो 50 क्वेश्चंस के आंसर किए उसको चेक करिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए। सो आप 1-2 दिन में उन क्वेश्चंस के रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको रिवाइज कर लीजिए। देन 1-2 दिन के बाद हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की अपलोड कर देंगे। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रिजिड बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव ऑन ए प्लेन, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स फॉर इट विल बी। सो अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम की, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट विच हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए सिस्टम। सो सिंपली यहाँ पे हमारे पास रिजिड बॉडी के जो कोऑर्डिनेट है दैट आर 3, और अगर वो किसी प्लेन पे मूव कर रही है तो प्लेन के जो कोऑर्डिनेट है वो है 2। So 3 plus 2 will be 5. So here 5 will be right answer. So now the second question is number of generalized coordinates required to describe the motion of a solid cylinder rolling without slipping on an inclined plane is. Now here you can see this system. So here we have need only 2 coordinates to explain this system. First one is radius of the cylinder and the second thing is angle, which is theta. So here 2 will be the right answer. And now the third question is the constants of a rigid body is. So यहाँ पे हमारे पास जो first option है that will be the right answer, which is conservative and slalonomic. So यहाँ पे आपको सभी constant के बारे में स्टडी करना है ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू कैन easily attempt. So अगर हम बात करें slalonomic की तो that are constants which do not depend on time, which is valid for the rigid body. And next 2 options में हमारे पास है anomic, that are constant which depends on time.
और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास है नॉन होलोनोमिक दैट आर कॉन्स्टेंट्स विच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। सो सिंपली आपको इन सभी कॉन्स्टेंट के बारे में स्टडी करना है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग represents the equation of motion for the system described by Hamiltonian H। So simply हमें यहाँ पे बतानी है equation of motion of Hamiltonian, which are option 3 q dot equal to del h upon del p and p dot equal to minus del h upon del q। And now the fifth question is a particle of unit mass moves in a potential v equal to x cube minus 3x plus 2. The angular frequency of small oscillation about the minimum of potential is। So simply यहाँ पे हमें निकालनी है angular frequency at minimum potential, and this problem is very simple. Let's see how to solve this problem. So यहाँ पे हमारे पास जो angular frequency का formula है that will be under root k upon m, and simply k is the double derivative of v with respect to x. So just take the double derivative of v with respect to x and that will equal to 6x. So हमारे पास जो मिनिमम पोटेंशियल के लिए कंडीशन है that is dv upon dx will equal to 0. So dv upon dx is 3x square minus 3. So just put it equal to 0 and we will get the value of extreme points. So here we have the value of extreme points which are plus minus 1. So condition for minimum potential is double derivative of v with respect to x should be greater than 0. So that's mean here we have x equal to 1. So by putting x equal to 1, so k will equal to 6. So the frequency will become under root 6. Because here we have given the unit mass. So m will equal to 1 and frequency will become under root 6. So under root 6 will be the right answer. Now the next question is a system is described by the Lagrangian L equal to half mr dot square plus half mr square theta dot square plus 1 upon r. Which one of the following is not true? So simply यहाँ पे आपको जो भी कंजर्वेशन थ्योरम्स हैं उसको स्टडी करना है। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में पता होगा तो you can easily attempt these type of questions. And here fourth option will be the right answer. Linear momentum of system is conserved, because here we have asked for the option which is not true, and for that Lagrangian total energy will be conserved, angular momentum will be conserved, and also theta is cyclic coordinate. Now let's come to the seventh question, which is if q1 and q2 are generalized coordinates and p1 and p2 are corresponding generalized momenta, then the Poisson bracket of this is। So here we have to solve the Poisson bracket, which is given q1 square plus q2 square 2p1 plus p2. So simply आपको पता होना चाहिए कि Poisson bracket को कैसे solve करते हैं. So you can easily solve this question. Now let's see how to solve this question. Now here the given Poisson bracket is q1 square plus q2 square and 2p1 plus p2. Let's say first term denoted by capital Q and second term denoted by capital P. So now it can be solved as, so यहाँ पे हम Q1 और P1 के लिए अलग से लिखेंगे and Q2 and P2 के लिए अलग से लिखेंगे. So here we have del capital Q upon del Q1, del P upon del P1 minus del Q upon del P1 into del P upon del Q1, and similarly plus del Q upon del Q2, del P upon del P2 minus del Q upon del P2 and del P upon del Q2. So simply यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे and we will get 2Q1 into 2 minus 0 plus 2Q into 1 minus 0. So here we will get 4Q1 plus 2Q2, and that can be written as 2 into 2Q1 plus Q2. So that will be the right answer. And now the next question is Lagrangian for simple harmonic oscillator with frequency omega, mass m in one dimension is given by। So यहाँ पे simply हमको Lagrangian लिखना है इस system के लिए. So we know that Lagrangian is equal to kinetic energy minus potential. So in case of simple harmonic oscillator, kinetic energy is half mx dot square
and potential is half m omega square x square. So simply we will get half mx dot square minus half m omega square x square, which can be written as half m into x dot square minus omega square x square. So that will be the right answer. Now the next question is the probability distribution of a variable x in the range minus infinity to plus infinity is given by p equal to 10 exponential minus 2x square minus 4x minus 6. The maximum probability will correspond to, so simply यहाँ पे हमें probability distribution दी हुई है, so यहाँ पे हमें निकालना है कि x की किस वैल्यू के लिए maximum probability होगी. Now let's see how to solve this problem. So here the given probability distribution is 10 exponential minus into 2x square minus 4x minus 6. So the condition for maximum probability is dp upon dx will equal to 0. So just take the derivative of p with respect to x, and we have 10 exponential minus 2x square minus 4x minus 6 into minus 4x plus 4. So here the first term is function which can't be equal to 0. So we have minus 4x plus 4 equal to 0. So from here we will get the value of x which is equal to 1. So here x equal to 1 will be the right answer. Now let's come to the 10th question, which is the phase space trajectory of a single particle falling freely from a height will be. So simply यहाँ पे आपको phase space trajectory का जो concept है वो आपको clear होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी पे हमने ऑलरेडी पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वहां से आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि हाउ टू ड्रॉ द फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी. एंड इन दिस केस फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. मोस्टली हर एक एग्जाम में फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप एग्जाम से पहले एक बार वो वीडियो देख लें. सो दीज आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. सो इन 10 क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है और सिंपल कैलकुलेशंस होंगी. सो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की आंसर की वेबसाइट पे डाल दी, आप जाके चेक करिए. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. एंड द साइट इज www.onlinephysics.oo. और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक. सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब फॉर लर्निंग एंड शेयर फॉर हेल्पिंग. Please share this video to all your friends so they will also get benefit from this. And the last thing is, please don't forget to like this video. Thank you.